Audio.com. 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 आपका आवाज नहीं आ रहा, आ तो रहा है, क्या बात करें। अब आया। चलो तो आ गया ना आवाज। वो साउंड थोड़ा ज़्यादा था। हाँ, म्यूजिक का साउंड बहुत ज़्यादा कर दिए हैं जान के।
Astra Abyssal. Okay, let's go guys. आज अयाका का वेपन, अयाका का वेपन इसको करना है इनहेंस। ये वाले चाहिए मटेरियल्स। आज डोमेन खुला हुआ है, लेट्स गो कंप्लीट करा जाए आज डोमेन अपना। बूम बूम करके, बूम बूम करके, कैसे करके बूम बूम। फुल बूम बम। आज अयाका का वेपन 90 कौड़ी देते हैं, फिर अयाका को भी 90 कौड़ी देंगे, फिर अयाका का टैलेंट भी 90 कौड़ी देंगे, फिर बूम बैम करके इसका आर्टिफैक्ट लगा ही देंगे, फिर बूम बैम। ये और बताओ डेडपुल पीको का काउंट कैसा चल रहा है? पीमकुस का काउंट कैसा चल रहा बताना जरा। पानी वाले कैरेक्टर हो गए तो क्या करूँगा मैं? अभी तो कुछ नहीं किया आज कुछ नहीं किया है। कोई बात नहीं ब्रदर। अरे उसका बस 8 कैरेक्टर बिल्ड कर दो, उसका टीम बना दो, अपना चलते रहेगी। अनिकेत भाई को दी है स्टोरी के लिए। अच्छा वो स्टोरी कर देते। अनिकेत किधर रह गया ब्रो? अनिकेत ब्रो नहीं आया अभी तक। Where is अनिकेत ब्रो? This is order. This is order. Teamwork is dreamwork. Yeah. Take cover. Boom bam. इसको बोलते boom bam. Let the world collide. ये Here इसको come the बोलते boom fireworks. bam. फिर इसको बोलते bam boom boom boom. Boom bam boom boom bam boom boom bam boom 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 bam boom boom bam boom. Yeah bam. Stabilize. I will have order. Bam. Let my name echo in song. खत्म भाई साहब। Easy क्या था? Easy। चलिए कंडेंस रीजन यूज कर लिया जाए। आफ्टर स्टोरी एंड एयर अप मैं कैरेक्टर बिल्ड करूँगा। ओके कर देना मस्त उसका कैरेक्टर बिल्ड। अच्छा कैरेक्टर है यार उसके पास, मतलब अच्छा डैमेज देने वाला। अब नाव्या है, समझ लो नाव्या तो काफ़ी अच्छी है भाई। अब क्या चाहिए उसको? कैरेक्टर उसके पास अच्छे हैं। मेन उसका ये है जिसको बिल्ड नहीं आया है करने अभी तक। रोटेशन में दिक्कत हो गया गाइस, रोटेशन में दिक्कत हो गया, थोड़ा उल्टा करेंगे। कोई बात नहीं चलता है बैनी। Order guide you. ऑर्डर गाइड यू। ये लीजिए बैनी आ गया। ये बूम, ये आगे चलेंगे। ये बूम चलेंगे तो नहीं चलाएगा। ये आगे चलेंगे बूम, ये आगे ये बैम। यू ही नहीं क्या कोई बोल सकता है क्या? पीको दी नहीं है सबको पता है। हाँ काम हो जाएगा। ओके ब्रदर। चलो नेक्स्ट करा चाहे। नेक्स्ट कंटिन्यू यो Gather. Everybody stand back. I will have order. Solidify. Time to shine. Strike a pose. Here come the fireworks. अरे भाई सब मर गया। कंप्लीट भी हो गया भाई।
materials कलेक्ट करे जाएंगे। बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। देखो हाउ टू यूज कैरेक्टर रोटेशन। हाँ कैरेक्टर रोटेशन वाला उसको थोड़ा Gather. Out of the way! I'm going in! This is order. Shower me with praise! Let the world come alive! Go Bishop do! Time for a light show! Ha! 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 Teamwork is dreamwork! I will have order. Time to shine! A festive retreat! ये 22 के 44 के तक डैमेज देता है हमारे भाई, तो बहुत मस्त है। तो और फिर 50 के आराम से। ओ भाई मैं इतना डैमेज दे रहा था। Take cover! I'm going in! Yoo-hoo! Let my name echo in song! This is order. Fire hazard! Everybody stand back! Let the world come alive! Order guide you. चलो कंडेंस्ड बना के बढ़ाया जाए, थोड़ा कंडेंस्ड। फ्लाइज पकड़ने होंगे, क्रिस्टल फ्लाइज, क्रिस्टल फ्लाइज एक ही जगह मालूम है क्रिस्टल फ्लाइज का। यहाँ अब सोच रहे हैं कि यार तो को फुल बिल, अरे सोच के कर दो, सोचना भी फटाफट बिल कर दो। ये सब काम में देरी क्यों कर रहे हो? चलो काम भर तो मिल गया। इसको भी मारना होगा, इसको भी मारना होगा।
Stabilize. Out of the way! Goldfish of doom! Teamwork is dreamwork! Time to shine! Shower me with praise! How dare you! I will have order. Solidify. Here come the fireworks! Time for a light show! दो मर जाता है, एक लटक जाता है बस. Gather. Everybody stand back! Let the world come alive! The fuse is lit! Goldfish of doom! Get out of here! अरे भाई बहुत हार्ड. अरे थैंक यू आदित्य भाई. तुम बोल दिए भाई, बस बोल दिया. Order guide you. Stabilize. Time to shine! Strike a pose! Teamwork is dreamwork! This is order. Gather. इवेंट को पूरा कर लो फिर निकलिए. हाँ इवेंट यार, इवेंट करना होगा. मोई मोई. मोई मोई. अभी तो चिपी चिपी चैप चैप चिपी चिपी चल रहा. अच्छा weather weather. Experience traveling, know how to perform. अरे ये आ गई, ये इसको बफ देने के लिए. ठीक है, और किसको ले ले ब्रो? और किसको ले ले?
हील करने के लिए तो कोई है नहीं। चलो बफ दे देगा ये यार। डूबी डूबी डाबा डाबा। I will have order. Everybody stand back! Everyone on me! Attack! That's umbrella warfare, I guess. Umbrella warfare, I guess. Hiya! This one's got your name on it. A proper send-off from Cena Lila. All in! Rally! Teamwork is tree work. Let's lock. Order guide you. Solidify! Watch out! Attack! That's the way. Watch out! Advance! Everyone on me! Going in! I will have order. Rise! Hey, coming at ya! A proper send-off from the Cena with love. Ha! Na! Cha! Na! Na! Ha! Order guide you. Stabilize. Teamwork is teamwork. Press the advantage. Attack! That's the way. Coming at ya. Hey there! Coming at ya. Fire! Solidify. This is order. Let's light it up! Rally! Charge! Watch out! Attack! That's Oh my god, oh my god. गोल्ड तो मिल गया हूँ। गोल्ड तो मिल गया हूँ। 6,000 गया बस। only 6,000 लेकिन हो गया। Doobity tap tap tap. Fast, fast. 68 मिला इसमें। सबसे ज़्यादा इसी में मिला। 90 थी ना। Actually, chill me, Mary. क्या चोली चोली व्यूज तुम्हारी क्या चोली तुम्हारी इवेंट शॉप नहीं ये वाला क्राउन अभी तक नहीं मिला है 120 है 20 चाहिए 80 और चाहिए भी इधर है भाई बिल्डिंग file hold present the environment and character who will perform उसके लिए तो यही ठीक है highlight the actress playing
emergency phones. मैक्स भाई याद है जब तू जेंशियन बट टेस्ट करने के लिए स्ट्रीम किया था? अभी ये डिफ़ॉल्ट बन चुका है। हाँ भाई, बस ऐसे स्टार्ट किए थे ट्राई करने के लिए कि चलो देखते हैं क्या सा चलता है गेम, लेकिन अब मज़ा आने लगा। सेकंड वाले में थर्ड इमेज ये होगा। और हाँ हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ, पर अभी ये परेशानी है कि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं। फिर कॉलेज में ये खेल पाऊँगा कि नहीं मुझे नहीं पता। कॉलेज में चले जाओ तो फिर हाँ टाइम का तो दिक्कत होता है, मैनेज करना पड़ता है थोड़ा मैनेज। 20 पॉइंट्स मिला यार, 30 मिलना चाहिए था ना। देखो इसमें 30 मिला, 20 पॉइंट्स मतलब कुछ गलत रह गया। इसमें भी 20 मिला मतलब कुछ गलत रह गया। कोई नहीं, इसमें भी मिला है 30। ओवरऑल ठीक ही है, 3 स्टार मिल जाना चाहिए। हाँ 3 स्टार मिल गया। दैट्स नफ, आई थिंक दैट्स नफ फॉर द क्राउन, आई थिंक सो। नहीं यार, क्राउन के लिए और चाहिए, थोड़ा सा रह गया क्या? नहीं नहीं, हो गया, क्राउन मिल गया, क्राउन मिल गया गाइस। अब क्या, अब क्या हो गया, Every क्राउन मिल journey गया, has its final day. काम खत्म भाई अपना। अब वेपन अपग्रेड करना है अयाका का। किधर इसका वेपन? कुछ कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे, जैसे कि ये, जैसे कि ये। पहले क्राफ्ट करके देख लेते हैं। क्राफ्ट 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 अगर क्राफ्ट कर सकते हैं या नहीं, क्राफ्ट कर सकते हैं तो फिर क्या दिक्कत है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। क्राफ्ट कर लिया चाहे। शिनोबो 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 7। ओके ब्रो, 7 कर दो क्राफ्ट। ओके ब्रो, बोनस मिल गया। रुक जाओ 1 मिनट, ये सारे करता हूँ। सिल्वर तो हमें चाहिए नहीं भाई, अब बस गोल्ड ही गोल्ड चाहिए। सभी को गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। अयाका 90 हो गई। 90 नहीं हुई, 80 हुई है, हो जाएगी 90 भी हो जाएगी। टेंशन की बात तो नहीं है। 1 मिनट, वो मटेरियल लिख क्यों नहीं रहा?
हाँ यही तो है ब्रा। ये क्या है? 39 है। सबको कन्वर्ट कर दो ब्रा। ब्रा सबको कन्वर्ट कर दो। थैंक यू ब्रा। 15 बनाओ इधर आज तो तुम बैम कर दिया जाएगा ब्रा। ओके ब्रा 90। चलो अगर 90 हो गया। अनिकेत मेरे खेलने के बाद खेलते होगे तुम। अनिकेत तो खेल रहा था, स्टोरी कर रहा था तुम्हारा। लेट्स अपग्रेड इट गाइस सक्सेसफुली। ऑटो ऐड मटेरियल्स भाई। 3 स्टार वेपन में अच्छा वाला स्वॉर्ड निकल जाता है। स्वॉर्ड 3 स्टार है भी नहीं मेरे पास। छोड़ो यार, इनहैंस मारो। क्या इतना सोचना। ओके ये और भी चाहिए होंगे। 18 ही है। 27 चाहिए। ये चाहिए गोल्ड वाले। क्या चाहिए? ये गोल्ड वाले चाहिए। गोल्ड वाले 6 बना सकते हैं क्या? Boats are made for transferring commodity. गोल्ड वाले 6 बनाने हैं। बना ही देंगे भाई, अभी रुको। अब भी बना के देता हूँ भाई गोल्ड वाले 6। 6 बन जाओ यार प्लीज यार। ओ माय गॉड बन जाओ यार। चलो 8 बन गया है। एक का तो परेशानी खत्म हुआ, लेकिन इसमें लटक गया क्योंकि वो है नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा मैच करना पड़ जाएगा। वेपन्स में अगर जाए इनहैंस करने में तो इसको मारना पड़ जाएगा। 27 चाहिए। चलो इसको ख़त्म ही कर देते हैं आज। इस पूरे हिस्से से मैप से ही ख़त्म कर दिया जाए जिसको। ठीक है तुम भी अपना कंप्लीट कर लो भी। हाँ कर लेते हैं। स्ट्रीम पे नहीं रहेगा तुम लोग। कल भी वॉचिंग नहीं आया था, आज भी वॉचिंग नहीं आ रहा यार। तुम लोग क्या करेगा, क्या करे। 2 फ़ोन में तो हम खोल के रखे हैं। एक मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, 3 हो गया था। अरे तो अभी तो 5 का बातें हैं, इसमें 3 कर रहे यार। स्ट्रीम पर तो मैं हूँ, हाँ तुम तो हो ही। एक्स्ट्रा फ़ोन है तुम लोग के पास, सब में खोल दो। हेलो ब्रो किधर हो तुम? हेलो ब्रो इधर सो रहे हो क्या? Gather. Let the world collide! A festive retreat! Fire hazard! बूम खत्म भाई। चलो यहाँ आ गए हैं तो इसको छोड़ दो। इसको क्या मारना, इसको मारने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसको मारा जाए, इसको मारने से कुछ फ़ायदा भी होगा। चलो चलो। ये कौन है भाई? इसको तो भाई बुलाए भी नहीं है, पता नहीं किधर। Stabilize. Order guide. ये मार देते हैं इसके बाद। Everybody stand ये back! मार देते हैं इसके बाद फुल पूरा। Out of the way! ये मार देते हैं। इससे बचेगा तो ये मार देते हैं। खत्म भाई। मेरे पास 5 फ़ोन नहीं है तो भाई तेरा एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है।
ऊपर ऊपर ही जाना है, पहाड़ के नीचे नीचे नहीं जाना है। There you are, eavesdropper. How brilliant! अरे ये है कहाँ पे भाई, कहाँ सो रहा है ये? घर भी तो नहीं है, तो इधर हो रहा है। The show begins! Let my name echo in song! Off we I always bounce back. Just Teamwork is dreamwork! Get out of here! Out of the way! Solidify! Yeah! God! Yeah! One man's stone is another man's gem. Yep. This is order. Get out of here! Out of the way! Let the world collide! Strike a pose! Here come the fireworks! Time for a light show! Sharing. चलो You've जाए got nothing else to guys. do. Why don't I tell you a story? एक मिनट रुको, कुछ चैट नहीं कर रहे या चैट आनी है? क्या कर रहे हो तुम लोग, बताना ज़रा। चलो आगे। अच्छा हाँ, नहीं करे चैट। अच्छे, हमको लमगा ना कि क्या हो गया, क्या हो गया है अचानक से चैट क्यों नहीं है? हेलो, क्या मूर्ति वूर्ति देख रही है यार, इसका भी हमको बात सुनना पड़ेगा। छोड़ो।
बाद में करेंगे, बाद में। फिर तो ये सब नाचो। अच्छा यहाँ पे Gather. अच्छा तुम कुछ Get out भी, of here! तुम कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहे हैं भाई? Fire hazard! नहीं कर रहे। क्या घूम रहे हैं ब्रो? ब्रो बता ब्रो, ब्रो बताओ ना ब्रो, क्या घूम रहे हैं? It's pouring out here! Wait, the water levels aren't rising, are they? 3 स्टार वेपन के बारे में जो क्रिट डैमेज 5 स्टार। हाँ तो वेपन है ही नहीं। वेपन तो हम सब अपग्रेड करने में लगा दिए थे, तुम लोग बता ही नहीं थे हमको। वो बोला वेपन है नहीं मेरे पास, 3 स्टार वेपन ही नहीं है। स्वॉर्ड वो बोला है स्वॉर्ड। अच्छा है R5 पे है, यही वाला था ना हार्वेंजर ऑफ डॉन। उसको तो R5 करके रखे हुए हैं भाई। ये बाप रे बाप, धड़ाधड़ क्रिट डैमेज दे ले भाई। इतना तो 5 स्टार नहीं देता है। लेवल 50 पे ही 30% क्रिट डैमेज है इसका, और HP 90% से ऊपर आएगा तो क्रिट रेट भी 28% से बढ़ा देगा। भाई ये 3 स्टार कैसे है? ये 3 स्टार कैसे, हमको समझ ही नहीं आ रहा कैसे। इसको तो 6 स्टार होना चाहिए। इतना क्रिट डैमेज भाई, इतना क्रिट डैमेज कैसे? ये देखो ये क्रिट डैमेज वाला 33% दे रहा है 80 लेवल पे। 33% कब दे रहा है? लेवल 80 करने पे, समझ रहे हो? इसको देखो लेवल 50 पे 30% क्रिट डैमेज, इसका 33% लेवल 80 पे, इसका 30% लेवल 50 पे है। अब बताओ, मेरे पास भी होगा शायद 10 स्टार। हाँ वो तो सस्पिशियस बात है। आयाका के वेपन को देखो, आयाका का वेपन। आयाका कौन है भाई? आयाका अच्छा ही है। इसका क्रिट डैमेज 40 है, 80 पे 40% क्रिट डैमेज है इसका। इसका 30% क्रिट डैमेज अभी है। बताइए भाई कैसा भाई? सस्पिशियस ऐसे इसको कह सकते हैं कि एक तो HP 90% से ऊपर रहना चाहिए तो क्रिट रेट भी बढ़ा देगा। बेस अटैक इसका कम है, बेस अटैक से फर्क पड़ता है क्या? ये तो नया एक मिला है एनर्जी रिचार्ज वाला, ये भी अपना फिजिकल डैमेज बोनस वाला। एनर्जी रिचार्ज का पहले ही मिल चुका है। ओ HP परसेंटेज का है, एलिमेंट्री मास्टरी, क्लेमर वेपन, एनर्जी रिचार्ज। ये स्वॉर्ड है, द फ्लूट, अटैक परसेंटेज, बेस अटैक भी है इसके पास। बेनी को जो हम दे रखे हैं फिजिकल डैमेज 497 दे रहा है। ये नहीं दे रहा। आयाका का वेपन 90 पर 44.1 देता है,
और ये 3 स्टार वाला 90 पर 46.9। वाह, अकेले क्रिट डैमेज भाई इतना लेकर चला जाता है। Can be such a hassle. और क्या चाहिए? Ow! अरे बाप रे, अरे साला इलेक्ट्रो चार्ज हो गए हम तो, दिन ही बना दिया मेरा तो ये इलेक्ट्रो चार्ज करके। Strike a pose. इधर कुछ है क्या? कुछ तो नहीं है। ऊपर में होगा शायद, नीचे तो कुछ नहीं है। मगर जो फुरीना के 5 स्टार वेपन है वो 88% क्रिट डैमेज देता है 90 पर। फुरीना का 5 स्टार वेपन ना भाई देता है 88%। बाप रे बाप। इलेक्ट्रो चार्ज कर करके हमारा दिन बन गया। Stabilize. Teamwork is dreamwork. Out of the way. फुरीना को ले आओ, इसका हेल्थ बढ़ते रहेगा, ये इसको अकेले संभाल लेगा। Shower me with praise. सब अटैक रोके हुए हैं तब से। You win this battle. अबे यार यही तो दिक्कत हो जाता है, यहाँ पे अब दिखा नहीं रहा है कहाँ मारना है, किसको मारना है। नहीं यहाँ पे कोई मैप में दिखा रहा है कि यहीं पे है। अब यही दिक्कत कर देता है, यहाँ बन नहीं पाता है यहाँ पे फिर अपना। सत्रह 18 चाहिए यार। हट, आज भी आएगा कभी अपन मैक्स नहीं हो पाएगा लगता है। देख लो 27 चाहिए, आज भी नहीं हो पाएगा मैक्स। Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper since we first set foot on Inazuma. So many things have happened
since then. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. So, where should we go today? Huh? What's up? Hey! What the heck was that for? Doesn't want to talk, huh? Alright, let's convince him to calm down a little. Huh? So you don't have a vision after all? Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait! Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animo vision. That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Hey! Don't be mean! I'm on smart lots of the time! Anyway, just to be on the safe side, we should go find Kazuha right away and tell him to watch his back. Oh? What kind of hunch? A special connection? You mean beyond already knowing each other? Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. Kazuha is. You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. तू तो क्या मतलब है? Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did? I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryou Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Thank you! Guess we'll go pay a visit to the Tenryou Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd.
ऑफलाइन है खेल लो तुम ऑफलाइन Up and away. Oh? It's you. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the Shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? In short, there was once a group of select bladesmiths who served the Shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun and the Shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in your words.
Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaidahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaedahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the Traveler in investigating the one who attacked her, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. A quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaedahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaedahara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaedahara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him.
To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Millions? Of mora? Whoa! Oh, wait, even at that price, you probably still shouldn't. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads, and I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma? Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma Smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. Ah, if it isn't Kaedehara Kazuha. What brings you here today? Huh? You two know each other? Yes,
The Kaedahara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Let me quickly explain. The Raiden Gokaden was the collective term for the 5 most acclaimed bladesmithing arts in Inazuma. The techniques of blade making were personally bequeathed to the Raiden Gokaden by the almighty Shogun, and over time, further honed and enhanced by the most talented craftsmen. Unfortunately, a series of events led to the gradual decline of many clans in the bladesmithing trade. Today, only the Amenoma clan has kept its art alive. So sad. It is a great pity indeed. In the old days, we each had our specialties, and just as iron sharpens iron, so too did we learn much from each other. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. As for the art of the Kaedahara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. अभी लगता देगा You पता। are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedahara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryou Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryou Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse, and neither of them came back. Yes, strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for
He attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Huh. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear, with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh! What happened? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him. But making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink.
After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand. Ame no Mayuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Ame no Mayuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Paimon was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and, nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. An interesting explanation. I was also considering this possibility. Ame no Mayuya is an expert on swords. He could have noticed some problematic details about Mr. Nagato's collectibles. Maybe he recognized a blade as a fake, or a well-known stolen item. Either way, after arguing about it, the two men agreed to hide the truth of this matter. They thought a fire would destroy everything. But then the Tenryou Commission began investigating and uncovered some incriminating details, so they fled to protect their secrets. But it's a far-fetched theory. I can't imagine how they would have been able to reach an agreement. One fact that I keep coming back to is that Ame no Mayuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there?
Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay. काजुआ का स्टोरी क्या फिर Where तब should we एक go वेपन now? मिला हाँ काजुआ का Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. पूरा स्टोरी कर लेंगे तब ये देगा क्या पहले नहीं दे सकता Wait. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. But there's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look in. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary! Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us! All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy source left this place.
2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune has already befallen them. Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. From this point, the trail appears to split into 2. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. Quite possibly. Let's search the area. Look at all those hilly trails. They're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. I'm going in. Take cover. Strike a pose. It's... Ugh! Look at this red stuff. What is it? By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Well, let's take a look. According to this letter, a conflict arose because Ame no Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. So, where is he? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been Yes. Right now, we need to uncover some more important truths. If Ame no Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right! So let's get moving! I wouldn't be surprised if he, too, fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the 2 men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Wait! You figured it out? So these 2 cases are connected after all? I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. मेरा
कार्टून नेम एक मेन कैरेक्टर का है नारुतो में। अच्छा, नारुतो वाला कैरेक्टर का नाम इसमें ले लिया है। मम्मी मौजू आ गया क्या? मौजू आ गया? He seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself! It's no use hiding anymore. Kaedehara Kazuha. It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Ame no Meyuya that stands before us. But what if instead of facing Ame no Meyuya, we are in fact facing the blade in his hand? Now that you mention it, it is giving off a strange ये वाला sword light. मिलेगा क्या? Whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect, or rather as a means to occupy, Ame no Meyuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaedehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So... swords can become conscious and control people? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. So Ame no Meyuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts?
Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you, and by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! The wind knows me. Solidify! I will have order! Get out of here! Take cover! Teamwork is dreamwork! Time to Join shine! me and suck that divine light! Shower me with praise! Go to ship down! Do not stand in my way, or I will strike you down too! Your bluff's fooling no one! You've lost! Lost? I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He's but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary, and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Amenoma Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, oh my god, free crown. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. ट्रिपल क्राउन दे देना नाविया को एकदम बेस्ट एकदम बिल्ड कर लेना नाविया और वो वस्ती जो है उसको भी. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Amenoma Yuya and make your escape. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ago.
The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities. मेरे पास zero crown है, तुम्हारे पास zero crown है. तुम्हारे characters सारे crown पहने हुए हैं, इसलिए तुम्हारे पास zero the crown. outcome that your maker would have desired? You... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. तुमने दे रखी But होगी even किसी as को, you हाँ, made your सबको journey दे to रखी. honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. And you should face reality. Easy for you to say. Traveler के Facing सारे reality बताओ. offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. लेकिन जानते हो ट्रैवलर जितना तुम बोल रहे हो ना स्ट्रांग होने वाली है, लेकिन वैसे नहीं होगी स्ट्रांग. ट्रैवलर बहुत कमजोर है. जो अननोन गॉड है ना, उसके तो आसपास भी नहीं भटकती. वो अननोन गॉड समझो 1 पे है, तो ये भी 7th 8th पोजीशन में है. ये बस इसी को ना हरा पाई है. किसको कह रहे हैं? अरे वो कौन थी? राइडन के साथ जिसका डोमेन आता है वीकली बॉस में, उसको हरा पाई थी. वो भी हेल्प के साथ. राइडन को भी नहीं हरा पाई. राइडन को भी, हाँ राइडन को कहाँ हरा पाई? इसके लिए सारे विजन का उसको पावर मिल चाहिए. ऊपर से वो हेल्प की थी यामी को, तब जा करके हरा पाई थी राइडन को. राइडन को भी नहीं हरा पाई, तो वो पावरफुल कैसे होगी भाई? अननोन गॉड तो सबसे ज्यादा पावरफुल है. उसके तो आसपास भी नहीं भटकती है ये. समझो 7th 8th पोजीशन पे है ये ट्रैवलर. इतना लगता है कि ट्रैवलर स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन उतना है नहीं. This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll सिनियोरा हाँ, सिनियोरा के आसपास की कैटेगरी की है, पावरफुल है. Strength is currently very weak. लेकिन सिनियोरा को भी रस्कल चाहिए था इसमें. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so... Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. We have a chance here to save an innocent victim. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected.
I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute! Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takatsukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. All right. पाइडो आर्कॉन का Please lead the नेशन way. है वहाँ पे हम लोग What मैटर about करेंगे Yuya? What should we do वहाँ with पे him? मारा मारी होगा The blade says मेरा he'll let यूपीएस खराब हो गया यार Yuya यूपीएस trail बनवाना us है कंप्यूटर silently. डायरेक्ट बंद हो जाता है Although he hasn't 1200 regained रुपए his का own खर्चा बता दिया consciousness बताओ yet, अभी he's पीसी not खराब in हो any गया था immediate उसका danger. एमपीएस बदलवाना था Are we sure उसमें this is a पैसा good लग गया उतना idea? It's a pretty यूपीएस treacherous खराब हो गया journey. यूपीएस बनवाने में पैसा लग रहा है भाई बहुत काम नहीं हो रहा भाई पैसा लग रहा है Be careful. फाउंटेन के बाद अच्छा अब सीधे पायरो और कौन से मैटर करेंगे है ना वहां पर हम फतोही हार्वेंजर्स नंबर 1 के अगेंस्ट होंगे अच्छा फतोही हार्वेंजर्स का दिन बनाएंगे ना चलो बना देंगे दिक्कत की बात क्या चलो बना देंगे भाई leave everything on this journey to me. नहीं तुम नहीं जल्दी भाई पीछे जाने को कोई पीछे As one with wind and cloud. How are you feeling? You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me, he's instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. ये पावर Let's keep going. Alright, chest आ गया भाई साहब ऐसा मजाक करते भाई इधर भी है क्या chest वैसे ये क्या है bro ये गेट क्यों नहीं खुल रहा bro ये वाला वेपन क्यों नहीं दे रहा ब्रो ये भी तो 4 स्टार वेपन ही है ब्रो ये भी तो 4 स्टार वेपन ही है ब्रो ये क्यों नहीं दे रहा ब्रो हम लोगों को ब्रो
तुम थोड़ा जोर से बोलो, हम थोड़ा जोर से बोले। ठीक है, हम तो जोर से बोलती है। यार मेरी फुरीना बिल्ड करवा दो तुम, उसके आर्टिफैक्ट फुरीना बिल्ड करवा दो। अभी करवा के देता हूँ, अभी करवा के देता हूँ, अभी तुरंत इंस्टेंट फास्ट एज फास्ट। यो हनी सिंगा, यो हनी सिंगा करता है ब्लिंग ब्लिंग। मर जा साले, साले मर जा। ये ब्रो आजा आजा, सबको मनाऊंगा, गेले मनाऊंगा। कोई बूम बाम नहीं करेगा, मर गया। Something's up with the blade. It's grown I can dimmer. sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely... अच्छा, What would that do to Amanome Yuya? क्या से बोल रहे हो? पता है आज I will be क्या careful किए with हो? it. क्या की बताओ? He also says he does not मैं have फिर any फुरीना plans के to give up आर्टिफैक्ट से easily. हाइड्रो ट्रैवलर पर He's यूज still करूंगा। trying to achieve his goal. हाँ, ये भी कर सकती हो भाई, सब बात तो सही बोले। हाइड्रो ट्रैवलर तो हम बिल्ड करेंगे, उसका मसला। हाँ रुक जा, कहीं चेस्ट वेस्ट नहीं छूट गया, देखेंगे। आजा साल, क्या भाई चिंता नहीं है क्या? चिंता नहीं है क्या? बाम्बा है हम। कौन है? काजुआ दी बाम्बा। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है ब्रो। डॉज करके से पीछे आ गया, इसको पता भी नहीं चला। यो सुपाक ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो। किधर चले गए थे तुम? ये आजा इधर, आजा इधर। ये खत्म हो गया भाई। बोल सकते हैं क्या? It looked like you were really struggling the entire fight. खाए खाए, ईट Yes. ईट, क्या खाई बताओ And बताओ। it looks like he's reached his यो limit. बाम्बा Machines बाम्बा brought a हाइड्रो big ट्रैवलर dimmer क्यों? again. हाइड्रो Doesn't ट्रैवलर look उसके जैसा anywhere मारता है ना, near as नेबुलेट impressive जैसा, as it did इसलिए। at the start. Perhaps this Nebulet time जैसा we'll finally मारता have a वो chance थोड़ा to see थोड़ा। his true form. इसलिए True form? What are you talking about? चाउमीन मंचूरियन, What the- चाउमीन मंचूरियन खाए। Is this the same blade as खाएगी before? चाउमीन It looks मंचूरियन, like a हमको piece थोड़ी of खिलाएगी। If you choose to continue in the state you're in, ले you wouldn't ये even be ब्लेड का able तो to beat दिन बन गया। Samurai and कितना Kairagi, मस्त चमक रहा much था, less the almighty चमके Shogun. खत्म हो गया इसका। Maybe you बहुत did थड़ हो truly गया अब। wield power to टूट ही हो rival the जाएगा Shogun's उस light टाइम when में। first forged. But the long journey from Snezhnaya back to हाँ, Inazuma has तुम्हारे left you साथ। battered and broken. अभी It तक barely needs सही stating एलिमेंट्स anymore. में हाइड्रो ट्रैवलर Your मैक्स ambition is a डैमेज flight of दे रही fancy. है। I finally figured out अभी why तक it was सभी that you agreed एलिमेंट्स to में my हाइड्रो bet. ट्रैवलर मैक्स डैमेज You wanted to reach a state of सही है। harmony with me. For perhaps then हम तो you would still be ट्रैवलर able को to दे देंगे wield वही वाला commendable power. थोड़ी डैमेज वाला But तलवार, regrettably, we are nothing फुरीना alike. वाला आर्टिफैक्ट। I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. डैंड्रो से भी The ज्यादा। only one who डैंड्रो तो truly रिएक्शन में यूज understood करता है you और क्या। had already बस passed उसका away by the बढ़िया time बिल्ड you were करना born. है, बस उसको बढ़िया बिल्ड कर दो। आर्टिफैक्ट मेरे साथ करना फार्म तो मस्त मस्त आर्टिफैक्ट तो निकलवा देंगे हम। मेरे पास तो फुरीना का भी वो वाला है, हाइड्रो डैमेज बोनस। We can help फुरीना this का time. आर्टिफैक्ट वाला Don't worry, I'll use my own जैसा blade. इसका है ना, It's just आयाका more का of the same. क्रायो डैमेज बोनस, उसी का आर्टिफैक्ट में वैसा ही। मेरे आगे कोई बोल सकता है क्या? सुपर ब्रो किधर हो तुम? फिर भाग गए क्या? सुपर किधर? सुपर आ हेलो ब्रो आर यू ब्रो? ब्रो क्या ही है ब्रो? ब्रो क्या ही है?
अरे मुझे मार दी भैया बिजली बिजली मार ये इसके पीछे ऐसे डॉज करके मर गया काजुआ। ऐसे ऐसे डॉज करा रहे थे हम लोग। इतने टाइम बाद हम कोई डोमेन हारे हैं। इसका भी तो हेल्प है। एक बार ऐसा करके ऐसा कर दूंगा इसका भी मर जाएगा। अरे इसका हेल्थ का तो फुल हो गया साला। Time to go. Into the wind. यार जुआ को मार दिया भाई। अरे बिजली चमका दिया। भाग 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 भाग। ये चीटिंग नहीं करने का। मेरा तलवार बोथड़ हो गया है। ये देखो ये रोक रहा है यार। ये रोक रहा है। चीटिंग करता है। बाप रे बाप। भाग 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 फुल स्पीड में। Clouds high. The birds call. Into the wind. मर जा भाई। चल हाँ तो पास है। चलो मेरे पास भी बढ़िया वाला हाइड्रो डैमेज बोनस आर्टिफैक्ट है। अच्छे तुम्हारे आगे। You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. We fought briefly together. You have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. ये ब्लेड तो टूट You गया यार। are हमको the नहीं first चाहिए। हमको person अच्छा to know ब्लेड the दो। truth. ये वाला ब्लेड नहीं लेंगे। I thought that if I could achieve Ishin harmony अच्छा with ब्लेड you, चाहिए हमको। अच्छा perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. अननोन गॉड को मार Indeed. सके। No matter how hard I tried, Unknown I God could अगर not God of attain War that वाला God हुआ तो perfect क्या करेगी? harmony that your personal blade does with you. ये Too कितने much देर का time has क्वेस्ट है? passed. पता My नहीं। 1 physical घंटा तो हो state गया is अभी तक poor, क्वेस्ट and करते करते without भी तो proper चल ही रहा है। maintenance, I can only 2 disguise घंटे my का। true appearance behind भी an 1 घंटा outer और ही तो। sheen. Yours is the blade that इस took on the स्टोरी Muso क्वेस्ट no के बाद Hitatachi. शायद हम आर्कन क्वेस्ट कर सकते And हैं। what a न्यू वाला। magnificent blade it is. 2 घंटा हो गया अभी तक। Perhaps नहीं तो 1 घंटा तो I shall ग्राइंड किए थे never ना उसके reach लिए। that वेपन level के of लिए। glory. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. सुबह से सोया ही हुआ था। There is something else I must tell you. माए घर तब से नहीं है Though घर your पे। maker may not have been aware, खोज रहे your हैं, बुला ability भी to रहे हैं तो possess नहीं आ your रहा है। own consciousness derived के from the लिए power of the तबीयत भी खराब है Tatarigami. उसका, बहुत sad Tatarigami था। is a malevolence from the मम्मी ancient भी आई तो past. उससे बात नहीं की है। It is the source of your mania and आ savagery. जाएगा घूम रहा Though you होगा। tried to cooperate with me while I was wielding you, टेंशन the हो part रहा of you है यार। driven इतना by टाइम हो गया। Tatarigami was constantly trying to जाता है seize ना तो control of my body. माइंड फ्री रहता है। जब से I sensed ही it, नहीं but घर पे I couldn't change गया, it. मन ही नहीं लग रहा। It is an उस पे integral मन part लटका of हुआ my है, किधर है, अभी consciousness. तक आया नहीं, कहाँ I है? resisted its temptations because टेंशन I हो रहा wanted है, to जाओ save ढूंढो Amenoma उसको Yuya. अभी। But I वो do not जरूरी know है whether stream you ही। yourself have any अरे intention of trying to ढूंढ fight के आ it. गए हम तो। I तुमको feel क्या a great लगता है? sense of regret for you. बीच बीच में 5-5 मिनट में Since कहाँ you जा रहे हैं embarked हम? on a जो journey bound for a स्टोरी चलते रहता है हम destination चले you were जाते हैं उसको बुलाने। destined never to अभी reach. भी गए बुला बुला के The लाए moment you नहीं है। embarked on this पूरा journey, गली में घूमते you रहता है इधर lost उधर। अब the कहाँ only किसके किसके person घर who जाए? could have ever बुलाना ही है। unleashed your true potential. ऑप्शन है बस। And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have बुलाने known पे this आ for तो a long जाता है, time. अभी आ नहीं रहा है। It और is the टेंशन true हो रहा है, source क्यों नहीं of आ your रहा? despair. खाना भी नहीं You खाया। gave ऐसे me अपना घूमते everything. खाना वाना खा के घूमता तब कोई My दिक्कत नहीं है। life, my form, खाना खा my लिया घूम रहा है। consciousness, खाना नहीं and खाया है। purpose. सुबह से How could सोया I हुआ था, possibly तबीयत भी deny खराब him टाइप his इसका लग wish? रहा था। I said टेंशन to हो रहा है। him, do खुद आ not जाता है, worry, आना from रहता है here तो on I उसको shall forge your legacy. पता नहीं How कहाँ could चली। I go टेंशन back हो रहा on my बहुत। word? I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. हाँ, शांत शांत रहता है। Where are you going, Kazuha? आज तबीयत खराब है। He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm.
Let's give him some time to reflect on things. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. आज लोग भी नहीं आए स्ट्रीम पे आज तो लोग भी नहीं आए स्ट्रीम पे एक दोनों ना एक गली में नहीं रहते हैं When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix, too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Amenoma Yuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all.
When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh? And who would be the opponent? I will release Amenoma Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. He must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryu Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. All right then. Successor of Ishin art, Kaedahara Kazuha. Successor of Amenoma art, Amenoma Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. The wind knows me. Into the wind. Time to go. One with nature. Fallen leaves, adorn my night.
wind knows all. Thank you for the experience. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. It's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. A prized Ishin blade. Turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji from the Bantan Sango Detective Agency tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Really? Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after all. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. Cutscene. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come.
Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. ला ये वेपन दे दो. So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. अरे यार इतना Only स्टोरी in करा the के final 4 स्टार दे रहा moments, यार 5 स्टार देना before his चाहिए ना यार. consciousness faded, was he willing to entrust it अरे to इसका another? होयो बस के और कौन सा गेम है हॉर्स रेल स्टार ऐसा कुछ करके है. तो उसमें 5 स्टार कैरेक्टर फ्री में दे रहा है The भाई. same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the नया stubborn CPU कब लोगे determination that blinded स्टोनर्स him to the गेमिंग path भाई. ahead. Speaking पैसा for नहीं है myself, भाई पैसा नहीं. I'd rather see him recognize and atone for his पैसा रहेगा mistakes. जिस दिन उस दिन I ले लेंगे. understand. जिस दिन Perhaps this पैसा is a वैसा flaw in कमाने my लग गए उस दिन ले personality. लेंगे भाई. अभी I've तो always been पैसे नहीं है. captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine New light CPU, GPU, touched something inside new of me, PC. just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. लैग Your मिलेगा. quest to face the gods and trace your Lag sibling कहाँ भी inspires lag me in तो the नहीं same है. way. After everything रुपया I've है seen, क्या? रुपया perhaps पैसा these pursuits डॉलर fascinate me a little more than they should. येन पाउंड I will कुछ नहीं है continue to मेरे support पास. you from this point on. Know that you will. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? कुछ काम जी. You're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response to the offer he हॉकिन made रेल me. स्टार. हाँ यही वाला गेम. इसमें 5 स्टार कैरेक्टर दे रहा है भाई फ्री में. हम लोग के लुलु आ दिया है. GTA में तुम अमीर हो. GTA में तो बिलियनर है भाई. GTA में तो मेरे आसपास कोई नहीं भटकता है. आईफोन किसका था तब? आईफोन जो तुम्हारे ऊपर इसका चैट है ना पीक्यू करके उसका है. वो खरीदी है आईफोन 13 Pro Max 90,000 का. You've returned. I hear that the issue has been resolved. न्यू Though this was a treacherous investigation indeed. Most 90,000 में fortunate तो that हम no पता lives नहीं were क्या lost. क्या कर लेते भाई. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amano 14 Pro Mayuya should Max. conclude ये soon. नहीं झूठ बोल रही है. Do not believe he 14 will Pro be Max charged with नहीं. any crime. 13 है. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the 13 details Pro again. Max है. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. पूरा Please take a look घर at this blade. चल जाता. What's हाँ. this? चौदह पागल तो Ishin, 14 है. हमको लगा a 13 है. weapon crafted using a 13 14 में long-lost डिफरेंस blade नहीं ना forged यार of the CPU का. तो Kaedehara उतना clan. पता नहीं चलता. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. जिनशन से बहुत I see. अर्निंग हो रही है व्यूअर्स understand. के लिए. The Kaedehara clan यहाँ has नहीं always मिलते. been a family of हाँ, वही ना भाई. bladesmiths, so it is only proper for me to iPhone continue on this वाले path. Were I पीटेंगे to accept आपको. your goodwill, I may find myself embroiled in CPU में conflicts difference between the है. shogunate and ए Sangonomiya. नहीं नहीं दोनों में सेम would not CPU है suit कि. You misunderstand. That was most certainly 13 not our 14 में तो intent. सेम ही CPU है.
I हाँ am प्रो aware सीरीज में अलग है, that I प्रो still सीरीज में अलग है, desire to सही बोले continue सही बोले, walking my own path. प्रो सीरीज में Very अलग well. है. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your Shogun. generosity. Where will you travel to next, Kazuha? मेरा प्रो I'll नहीं है. probably take to हाँ. the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, प्रो ही let's में see where 3 the wind कैमरा takes है. me. नॉर्मल में 3 है, प्रो ही में 3 कैमरा है. क्वेस्ट कंप्लीट हो गया भाई. You must have a whole bunch of questions after our last conversation with Nahida. Paimon was ready to ask her a million more questions, but didn't want to seem too pushy. Like, about these descenders. So, does that just Finally mean people complete, like huh? you who come traveling to Teyvat from someplace else? And as for your brother... Whew, so many questions. Let's go find Nahida and see what else we can find out. नहीं था. क्वेस्ट खुल गया क्या? नहीं था वाला. क्वेस्ट खुल गया नहीं था वाला. Fireworks are for now, but friends are एक तो मिला भाई. ever. ये देखो 4 स्टार वेपन. अटैक परसेंटेज बढ़ा रहा है. ये सब डोमेन करना होगा अब. मैक्स रिफाइनमेंट लेवल रीच्ड. अच्छा इसका एक ही मैक्स रिफाइनमेंट लेवल. क्योंकि क्वेस्ट से मिला है ना. Ad Astra. Thank you for Our conquest. Ice, meet. My future dark. Why this cola ये तो 90 कर दिए इसको. Implement का वेपन इनहांस. इसका वेपन टैलेंट वालेंट भी इसका अपग्रेड मारना है. इसका है डोमेन. ईएम पे ही बिल्ड होगी ना. ना मोड़ा ही नहीं है. फुलीना को तो कर दिए भाई 90. इसको
अगर हम ये दे दें तो 40% क्रिट डैमेज, ठीक है। इसी जगह पे इसका हम ये दे दें तो 30% तो ऐसे ही कर देगा। चलो आज क्वेस्ट मत करो अभी। हाँ क्वेस्ट नहीं करे आज। अभी तुम एमएक्यूलेट्स फाइंड करो, डालो सारे स्टैचू से उनको ऑफर कर दो। चलो ठीक है। Have you ever kept gold? चलो मून स्टैड, हेल्प नहीं करोगे मेरा फाइंड करने में तुम? अनिकेत ब्रा, आज हम बहुत ग्रीन ग्रीन है, बुक भी नहीं है, मोड़ा भी नहीं है, फ्रिजर भी नहीं है, तो बहुत गरीब है तुम। चलो खोलते हैं हम होयो लैब। गरीब हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है। खोल लेते हैं हम मैप, इंटरैक्टिव मैप्स, चलते हैं खोजने। फोन में देख देख के नहीं बनेगा, पीएमसी में खोल लेते हैं रुक। होयो लैब, इसको लगा देते हैं इधर। होयो लैब, इसका ना थोड़ा हमको सेटिंग, थोड़ा रुक जा, मॉनिटर का सेटिंग ही माइकलस रीजन स्टोन क्रिएट करो। उससे क्या होगा? उसको क्रिएट करने से क्या होगा? ले मेरा स्क्रीन है बंद हो गया, स्क्रीन ही बंद हो गया ब्रो। ये सब कुछ तो लगा हुआ है। ले मेरा मॉनिटर गया क्या?
क्या हो रहा है? अरे मॉनिटर सेकेंडरी वाला बंद हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा। चलो लोकेशन बताएगा कहाँ पर है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ कर लेते हैं क्रिएट। वैसे यहाँ इंटरैक्टिव मैप भी खोल दिए हैं। चलो माय गॉड। चलो इधर भी खोल लिए हैं, अब इधर भी खोल लेते हैं। पहले जो बोल रहा है क्रिएट क्राफ्ट करने वो कर लेते हैं। ये ज़ूमिंग कौन है वैसे? अरे वही क्लाउड रिटेनर, क्लाउड रिटेनर क्राफ्ट से रेडी होता है ना। किधर से क्राफ्ट होगा? ये चाहिए थोड़ा सा सिलेडिया। चलो यहाँ पे मिलेगा। इससे भाई हमें किल्लेस पता चल जाएगा कहाँ पे है। हम किधर जा रहे हैं? हमको जाना किधर? मैप ऐसा खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है, ठीक है। हमें क्लिस मिलेगा। हमको आना है इस तरफ। हम जा रहे हैं किस तरफ? इस तरफ चलना है। उल्टा जा रहे थे भाई। चलो इधर ही मिलेगा, अब जो मिलेगा। 3 चाहिए। तो स्वीट फ्लावर है, स्वीट फ्लावर नहीं चाहिए।
ऊपर जाओ थोड़ा, इस तरफ। अरे यार ये लोग बहुत साला परेशान करता है दम नहीं सब में आ जाता है, चूं चाई करके नीचे गिरा देता है। एक तो भाई इंटरैक्टिव मैप माथा छिया जाता है भाई, समझ में नहीं आता हमको, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है डायरेक्शन में। 2 मिला और चाहिए। चलो हो गया, इतना में हो जाएगा। अरे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है हमको मैप में। किधर गया क्राफ्ट होकर, किधर चला गया भाई? अबे क्राफ्ट होकर किधर चला गया ये? अब मिल गया गैजेट्स में। हाँ एक स्टोन क्या लोकेट होगा। अरे ये क्या बात हुआ, इतना करके हम बनाए हैं। एक से एक ही बताएगा, क्या फायदा फिर भाई? कहाँ पे यूज करे बताओ? कहीं भी यूज कर लो। नहीं यहाँ तो कहीं नहीं है, कुछ नहीं बताया। साइड में तो बस 70+ है, इससे सारे मिलेंगे। ब्लू सर्किल में फाइंड करना है। अच्छा बाकी में 170 200+ वही ना भाई, कैसे होगा कलेक्ट हो समझ ही नहीं आ रहा। ये तो इंटरैक्टिव मैप हमको नहीं समझ में आता है। लो अबे द स्ट्रेंज मार्क विथ किधर हमको जाना, किधर हमको जरा बताओ तुम लोग। इधर आओ, इधर आओ। कौन बोल रहा है? 3p इधर। इसको लेके वही भाई, इसको लेके क्यों डर रहे हैं भाई? वंडर लेके उड़े थे हम, मेरे पास तो अच्छा सा कैरेक्टर है, फालतू के दौड़े जा रहे हैं। दिमाग नहीं यूज करते हैं भाई हम कभी कभी, ईगो बन जाता है। इधर इधर ऊपरे में तो ऊपर में नहीं है, नीचे में है। सब नीचे में।
यो आई बैक। अब किधर जाना है, किसको मारना है? The wind rises. यहाँ पे है सुपर आर्क। चलो आगे बताओ। ट्री कहाँ ट्री पे है? यहाँ नहीं है, स्टार बन के भी नहीं दिखा रहा कुछ। यहाँ भी नहीं है। ऊपर देखो। अरे यहाँ ऊपर में है। Swan Fury. स्टार बन के क्यों नहीं दिखा रहा था? I got a new letter from the informant. Looks like the situation has changed again. जब तक ब्लू सर्किल फाइंड करना है तभी सारे चट्टान हैं। अच्छा Behold. और कहाँ फाइंड करना है? अभी अलग स्टोन बनाओ। Quit following me. है ही नहीं बोला भाई, अब जाके हमको भी फार्म करना पड़ेगा। The wind rises. मैप में देख के इससे अच्छा नहीं कर लेंगे हम, इतना हम कर जाएंगे। हट, इंटरैक्टिव मैप में देख के बात लेते हैं। जाके वो खोजना पड़ेगा वो। तो मैप में देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से आलसी दोनों मैप में ही देख के करना है। कहीं इसको कर लो। से लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ। जब तक वो बना रहेगा वेट। अभी भी ब्लू सर्किल शो कर रहा है तुम्हें? ब्लू सर्किल हाँ शो कर रहा है। इसका मतलब और भी हैं। ब्लू सर्किल किधर शो कर रहा है? इस तरफ तो हाँ, उस तरफ तो है ही भाई, बहुत सारा है इस तरफ तो। Relax. हम लोगों को कहाँ मिल रहा है? एक यहाँ पे है। फिर एक यहाँ पर है। एक यहाँ पे है पानी के नीचे। वो हटेगा नहीं जब तक सारे नहीं ले लेते तुम वहां से। अरे यार, तो कोई भी रीजन में नहीं दिखाएगा अब। There's no such thing as pure freedom in this पानी world. में यहाँ पे हाँ, Even the जहाँ wind पे है cannot ना blow ये on forever. वहीं पे है, जहाँ पे सुपर आके गया है वहीं पे है। सुपर आके Behold. मुझे भी दिख गया। कहाँ दिख गया भाई? हमको नहीं दिखा अभी तक। कहाँ से लोग को दिख रहा है? कहाँ से दिख रहा है भाई लोग को? ऊपर में यहाँ पे Quit following me. पेड़ वाला मिला ना, रुको उसको मार के कर देते हैं। हम लोग कहाँ पे हैं एग्जैक्टली? यहाँ पे हैं। ये वाला लाइन हाँ ठीक है। पेड़ वाला मिला। Relax. और ये कहाँ था? ये वाला भी हम लोगों को मिल गया।
पेड़ के ऊपर वाला। You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. Interesting to do. If someone can't handle it, पहाड़ से maybe that's their problem. कूदना है। ये वाला शायद कलेक्ट हो गया, इस पहाड़ से कूदने वाला। इस पहाड़ से कूदने वाला यहाँ पे है कोई क्या? पर है, डीसी पर आओ, डीसी पर आए तो डीसी पर आते हैं। डीम स्क्वाड। Huh? हेलो हेलो। हेलो हेलो। चलो बताओ। हाँ आ रही है आवाज। यो, सर्कल खत्म हो गया क्या? सर्कल खत्म हो गया। हाँ वो एक बार बताएगा, एक को मार्क करता है बस। ये तो खराब बात है ना यार। खराब यार, ग्राइंड हुआ, ग्राइंड करने को कह रहा है। ये तो चीटिंग है ना। ना मेहनत से गैजेट बनाते हैं, उसको परमानेंट भी नहीं करते। हाँ तो पहले सारी लोकेशन नाम ही लेना पड़ता है, एक दो बचते हैं जब भी। अच्छा यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ पे है ऊपर में। और गैजेट बना रही नहीं, मैप देख देख कर जा रहा है। एक तो मैप में दिखाता नहीं है भाई लोकेशन एग्जैक्ट। फोटो वोटो रहता नहीं है, पता नहीं चल रहा कहाँ पे है। कोई कोई में रहता है फोटो, कोई कोई में फोटो ही नहीं रहता। स्टार भी नहीं दिखा रहा कि इधर है। स्टार्ट का आसान वाला हो नहीं रहा, मुश्किल वाला तो सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे एक है, ये अनिकेत दिलवा रहा है। ले बेचारा का अल्टीमेट बर्बाद हो गया। अभी तक स्टार नहीं दिखा रहा यार बन के। अब तो गैजेट का वो खत्म ना हो गया ब्लू जोन, अब क्यों नहीं दिखा रहा? तो आसपास में दिखाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे जो आता है तो स्टार बनता है ना मैप पे। यहाँ वाला कलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्यों घूम रहा है ये? नहीं नहीं, वो बात नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि मैप पर देख कर आए ना यहाँ पे खोजने के लिए, इंटरेक्टिव मैप पे, तो यहाँ वैसे कुछ अपीयर होता है तो स्टार बन जाता है ना, स्टार टाइप का कुछ, वो नहीं बन रहा है यहाँ पे। वही बोल रहे हैं। तुम ऊपर क्यों कैसे गए? उड़ उड़ के आए? ऊपर नहीं आना है, कहाँ पे है? ये जो सामने पाइप है ना, किधर, कौन सा पाइप है सामने?
कौन सा पाइप है भाई सामने? सबसे अच्छा, ये रिस्पॉन भी होता है क्या खुद से उस टाइम? एक और कलेक्ट कर लिए तो कर लिए। तो हमको अच्छा ये वाला पाइप तो यहाँ का कलेक्ट किए हुए हैं हम तो। ये पाइप में कलेक्ट किए थे, ये तो याद है हमको, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा। चलो नेक्स्ट जगह तो यहाँ का कलेक्टर। हाँ तुम कहाँ पे हो? रुको आते तुम्हारे पास अभी उड़ते उड़ते। अच्छा ये एक एक्स्ट्रा होता है सेलेस्टिया में लगाने के लिए, एक एक्स्ट्रा मिलते हैं सभी। Quit following me. सेलेस्टिया में सारे लग जाएंगे है ना, सारे एलिमेंट्स के। वहाँ पर शायद होगा सारे एक एक्स्ट्रा सारे सबसे ज़्यादा ग्रैंड लगता है इसी को कलेक्ट करने में लगता है टाइम। कहाँ पे हो तुम? ऊपर हो तुम नीचे? अच्छा ऊपर में हो। आम रहा हूँ आम रहा हूँ। क्लाउड रिटेनर मिल जाएगी तभी सब जम कर करके चढ़ जाएंगे। वॉन्डर कहीं और ये कैसे रखा भाई? वॉन्डर का पैसिव लोगों बताते हैं। वॉन्डर का पैसिव है जेड क्लेम्ड फ्लावर, फिर है ग्लेज ऑफ रिवर्स, कुछ तो है मोर एक्सपीरियंस व्हेन असेंडिंग बो एंड कैटलिस्ट इट डिक्रीज बाय 50%। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब एक्सपी ज्यादा मिलती है वो असेंड करके वेपन। अच्छा मेरे को लगा उड़ने का होगा। मोड़ा वोड़ा में माइनस कर देता है, सब मोड़ा ज़्यादा लगने वाला रहता है ना तो कम लगाता है ये सब। क्या एक्सपी बढ़ा रहा है क्या? डिस्काउंट दे रहा है। अरे अनिकेत यहाँ पर था, गायब हो गया अभी। टेलीपोर्ट मार गया। तुमको मिला कोई? एक मिला। आते तुम्हारे पास। दोनों अलग अलग जगह घूम रहा है। जिस दिन 24 घंटे वाले स्ट्रीम करेंगे 3 लोग को बुला लेंगे, 3 लोग अलग अलग जगह घूम खोजते रहेगा, जिसको जहाँ मिलेगा रुकेगा बोले कलेक्ट कर लेंगे। ये हाँ नहीं वो मिला कहाँ अभी तक? स्टैचू का परेड कहाँ की है इतना? 3 और चाहिए मेरे पास, 3 और चाहिए। कौन 3 लोग? एक तुम रहेगा, एक सुपर आर्क रहेगा, एक अनिकेत रहेगा। तीनों अपना खोजते रहेगा इधर उधर। हैं तुम नहीं रहोगे? बताओ तो ऐसा करोगे तुम मेरे साथ? तुम हो मेरा बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा नाम है सुपर आर्क। सुपर हो तुम। सुपर आर्क आएगा, अनिकेत आएगा, डेडपुल आएगा, 3 लोग। हाँ तो वही तो बोले। तो तुम इसको बोले, डेडपुल को बोले। डेडपुल को बोले तुम रहेगा, सुपर आर्क रहेगा और ये ना।
3p मिल गया तुमको? अनिकेत को मिला? अनिकेत स्क्वाड पे नहीं आता आजकल, पता नहीं क्या हो गया। लिख रहा है कुछ। तुम इतने स्टोन बना लो ना, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। There's no such thing as pure freedom in this world. Even the चलो wind को तो cannot हम blow जाते on हैं वो forever. फ्लावर्स कलेक्ट करने। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे कम गए? मूनस्टैड में मिल गया तुमको 3p? रुक जाओ आ रहे। कौन से लेवल का तुम्हारा स्टैचू? स्टैचू ये वाला होगा 5 6 7 पता नहीं। 3p किधर है 3p? 3p है यहाँ पे, ऊपर में है क्या? Quit following me, squall and fury. ये bro There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. एक बार इधर आओ मेरे साथ। किधर? वंडर गिर मत भाई। ले ये तो फंस गया। कोई बात नहीं, इधर से आ जाएंगे भाई, दिक्कत क्या है? यो चू 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 चू। ओ भाई इतना ऊपर फेंक दिया। यहाँ पे क्या करना है? कुछ तो नहीं है यहाँ। हम इतना सुन बना लो। हाय पीकुदी कहाँ है? पीकुदी रील लाइक कर रही है बैठ के। उधर उसको रिएक्ट करिए। हाँ रील्स पे, स्ट्रीम पे नहीं है वो। ले नीचे गिर गए हम तो। Squall and fury. लोग और क्या कर सकते हैं? Unnecessary. चलो मुझे यार फ्लावर्स कलेक्ट करना है, मिले तो बता देना, हम आ जाएंगे तुम लोगों के पास। फ्लावर्स की लोकेशन पता है तुम्हें? हैं? लोकेशन पता है फ्लावर्स की? मैप पे देख के जा रहे हैं, जो हो देखा जाएगा। अबे गेम क्यों बंद हो जा रहा है? इधर से जाना है ही इस तरफ, ठीक है। ऊपर और ऊपर चलो। पहले अपना स्टैचू ऑफ 7 पर जाके ऑफर कर लो। है ये को तो मिलवे, दो को मिलवे किया है, 3 को क्या ऑफर करेंगे? जो पहले था सब ऑफर कर दिए थे। मिल जाने दो बिरादर, जाके कर देंगे ऑफर। पत्थर ही पत्थर है इधर तो। अरे अभी तक ये गायब नहीं हुआ है। पता तो चले कितने सारे। अच्छा पता चलाना है तुमको, इतना मुश्किल से यहाँ पे आए हैं, तुमको पता चलाना है। रुक जाओ, एक आध को फ्लावर ले लेना तो फिर तुम पता चल ही तेरा ना। 2 इधर मिला।
दूर दूर तक फ्लावर नहीं दिख रहा है। इस कोना में है, यहाँ पे बोला है बहुत सारा है, एक के साथ तो मिलेगा। कहाँ इधर है भाई, कहाँ इधर है? चेस्ट तो है यहाँ पे, लेकिन वो फ्लावर नहीं मिला। अरे यार क्या और साला हाइट जमा दिली। एक न्यू नहीं आता है जो और है। Unnecessary. यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारा फ्लावर है एक साथ, लेकिन यहाँ तो है नहीं भाई, तो छूटो दिखा रहा है भाई। नहीं 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 सही दिखा रहा है इस तरफ। यो बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा है। चलो हम जा रहे क्राफ्ट करके यूज कर देने, इतना क्राफ्ट होता है। मैंने 7 स्टोन बना लिए हैं एंड हर जगह यूज करके देख लिया, मगर शो नहीं कर रहा कोई। चाचू सन पर जाकर देखो। अच्छा आ भी जाता हूँ भाई, इतना तुम बोल दिए तो अब चला जाता हूँ भाई। साहब इतना जल्दी सब कैसे खेल लेता है भाई, तो सही है पीड़ो है, नूब्स ही रह जाएंगे हम जिंदगी भर। स्टैचू ऑफ 7 वर्शिप स्टैचू ऑफ 7 ऑफर ऑल। लेवल 9 पे है, 12/15 हो गया है। स्टैचू ऑफ 7 यहाँ वाला लेवल 9 पे 12/15 हो गया है। और बताओ और क्या करना है, सिर्फ 3 ही रह गए हैं सिर्फ। अच्छा तो मैक्स हो गया ये, ओ भाई बाम्बा है। चलो 3 और बना लेता हूँ मैं, दिक्कत ये ब्रो बाम्बा तो नहीं। 4 मोर 4 है भाई। हाँ 4 रह गया। चलो बनाते हैं, अब भी बनाते हैं भाई, अब भी बना के देता हूँ। वो तो यूज कर रहा है, एक ही बना सकते हैं, इतना जमा किए भाई एक ही बना सकते हैं, क्या मजाक कर रहे हो। रुको रुको आते हैं वहीं पे हम। कहाँ पे वहीं पे रहो, वहीं पे रहो, आते तुम्हारे पास अभी फटाक से। अच्छा देखो एक यूज कर दिए, कहाँ पे वरना ब्लू वाला देख लो। हम आते हैं फ्लावर कलेक्टर पे। ऊपर में हो क्या? इसके बाद ये वाला करवा दो यार, मेन तो वही है, जगह खोलना है। कहीं तो मिलेंगे। किधर हो तुम? ऊपर में हो क्या? और ऊपर है क्या? जान कितना ऊपर में दिया है कि यहाँ पर आ ही नहीं, कलेक्ट ही नहीं कर। और बमता हुआ और कितना ये तो उस जैसे इसका गैजेट है उसका भी वहाँ वाले का भी होगा। उसमें भी दिमाग खराब होगा, उसका सामान खोजना है। बाप रे किसी छुपा के रखा हुआ था यहाँ पे। अरे अभी तो इतना बना लेंगे कि क्या लिखा है? सब क्रायो कैरेक्टर लेके आना मेरे पीछे।
लेने के बाद अच्छा मुझे लोकेशन याद आ गई कहाँ हो सकते हैं। अच्छा ऊपर वाले आइलैंड पर। You think I've got a sharp tongue? तो I क्रायो just tell it कैरेक्टर like क्यों it लेके is. जाएंगे, मेरे पास If फुरीना नहीं है someone क्या? can't handle it, नहीं नहीं जा सकता पूरी ना, किसी और ने स्किल कर दी ना तो रास्ते में लटक जाएगी। अरे साला ऐसा तो मुझे बात ही नहीं था। इजी अंदर जा सकता है। जाते हैं हम तो तुम लोग तेज उड़ के आओ। मैं उड़ के जा फुरीना भी चलिए। मैं तो आया आधे रास्ते के बाद। क्या मिसाचो एक एक्स्ट्रा वाला बहुत मुश्किल है, एक्स्ट्रा वाला दिलवा दिया सुपर आर्क हमको। The show begins. उसको पता तो लोकेशन एक्स्ट्रा वाला मिल गया। न्यूज़ तुम लोग न्यूज़ हो, मेरे पास तो एक्स्ट्रा वाला भी है। नहीं क्या नहीं नहीं गया। How brilliant! ना ना फुरीना से जा रहा है, स्टैमिना भी नहीं है, यूज मत कर देना, लुलवा देंगे हम, लुलवा जाएंगे हम। लास्ट वाले में प्रॉब्लम होगा आपकी। अच्छा ऐसा क्या, यहाँ पर ये मैप में ही नहीं शो कर रहा है, पता नहीं कौन जगह है। मैप में दिखाता है। मिल गया मुझे एक। ए ले 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 मर जाएंगे अब हम, पानी में गिर गए। स्टैमिना भी नहीं, स्टैमिना भी नहीं है, ई स्किल यूज़ करना भूल गए। मर जाएंगे यार, हमको गोदी ले लो कोई। ठीक है आजा आजा बचा दो। भाई मेरी अचीवमेंट हो गई। उनको आने दो। और ये इतना दूर ग्लाइड कर गए, बाप रे। मैया की मैया बचा लो भाई, मर जाएंगे। ए किया यार। कूद गिर गया, कूद गिर गया भाई। ये चलो ये। अरे नहीं, अचीवमेंट मेरा भी कंप्लीट हो गया। ये आइलैंड पे आना ही अचीवमेंट था शायद। अरे ऐसा एक तो वहां पे भी है सेम इसी तरह का। यहाँ पे क्वेस्ट, यहाँ पे भी क्वेस्ट है, अभी क्वेस्ट बाकी है इसका। The wind rises. Squall fury. यहाँ पे कौन सा क्वेस्ट होता है भाई? Too slow. टाइम मैंने बेंड की है। अभी कैसे कर सकते बताओ, करवा दो। The wind rises. हो गई तो क्या करना होगा अभी यहाँ पे हमको? यहाँ से वो कितना नंबर है? 1p। अरे कौन सा कैरेक्टर लिए हुआ है वो? ये तो सुपर आर्क है, दूसरा 2p। इधर है ये। अच्छा यहाँ पे इसको तोड़ना है। फार्म सेटअप।
डीमलू को ले लो। हाँ जोंगलू को भी ले सकते हैं लेकिन ये ठीक है। चलो बताओ अब क्या करना है। इसको कलेक्ट कैसे करूँ? इसको तोड़ो, इसको तो तोड़ दिए, अब क्या करें? इसको मारे, इसको भी तोड़ते हैं। इसको रीड करो, इसको रीड वीड का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका रीड वीड का ऑप्शन नहीं आ रहा ब्रो, क्या करे अब? यहाँ है कुछ, जिसमें तो दिखाई नहीं रहा कुछ। वर्ल्ड क्वेस्ट है। वर्ल्ड क्वेस्ट में क्या नाम है इसका? तो सिमेरू, इनाजुमा इनाजुमा इनाजुमा, सिमेरू सिमेरू, फाउंटेन 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 फाउंटेन, यही है सब। कोऑप में नहीं होगा आई गेस, सोलो है ये। अच्छा अपना टाइम 2 AM कर रहे हो। वर्ल्ड क्वेस्ट खोले, चलो खोल लिए वर्ल्ड क्वेस्ट। अब बताओ सबसे नीचे वाली आ गए। एक मीटर वाली टाइम एंड विंड नेविगेट कर दी। You should really bring the Knights of Favonius with you तो next time. एरिया रीच्ड, हाँ वही है। 2 AM करो, 2 AM 2 AM टुमारो। ये 2 PM है, 2 AM 14 हो जाएगा ना? अरे AM वही होता है या सुबह के? अच्छा दोपहर के होता है। बहुत कंफ्यूजन है भाई हमको। एक तो यहाँ पर 7 बजता है, इसमें 2 बजा रहा है। चलो बजा दी। अरे यहाँ पे एक चेस्ट है का। We'll need more where that came from. हाँ यहाँ पे आ तो रहा है नहीं कुछ, रीड वीड करने का नहीं आ रहा। इसको रीड करना होगा तुम्हें, तभी स्टार्ट होगी। दोपहर का 12 बजे, दोपहर का 10, 11, 12। कोऑप नहीं है ये फिर। अच्छा यहाँ एक चेस्ट है, किधर किधर एक चेस्ट है भाई। एक तो लोग इधर हमको दिखता नहीं, गायब अलवलाए हैं हम, गेम में अलवलाए रहते हैं, हमको पता नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं, भाग में रहते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है। एलिमेंटल साइट तो इसी में दिखा रहा है कुछ है। अनिकेत किधर चल गया? अंडर द वाटर। हाँ पहले चेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं इसका। कहाँ तो बोल रहा है चेस्ट है। अच्छा यहाँ पे है चेस्ट। अरे स्पाई तो एक्सक्लूसिव चेस्ट है, लग्जूरियस चेस्ट है। We'll need more where that came from. I suppose this will do.
Let my name echo in song. Let's play. Feeling brilliant. Cha, hiya. हाँ अब आया ऑब्जर्व का कुछ तो अच्छा करके देखते हैं मोए मोए अबे स्टैचूज करवा दो यार 10 एकदम मैक्स आई वांट टू वाटर अब आया रीड करने का अपने साथ है कि एनिमल कैरेक्टर लो एनिमल कैरेक्टर पढ़ तो लिए अब क्या करें इसमें अब क्या करना है एनिमल कैरेक्टर ले लेते हैं पहले अब 2 बजाना एक बार काजुआ क्या करेंगे Right, let's head off. 2 बजाओ 2 बजा दे चीकी 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 2 बज जाओ Time to go. कुछ तो दिखा रहा है इधर जाने के लिए इधर जाने के लिए उसे एनिमल से तोड़ना वो जो दिखा रहा है इसको One with nature. अब क्या करना लुक फॉर द ऑब्जेक्टिव्स इन आइडिया एक यहाँ पिलर पे है ना जे में तो चिल्लर साथ वाले किल्लर काम करे कांड वाले लाइव है ट्रेलर और ऊपर हमको भेज और ऊपर हमको भेज गिर गया नीचे में दिनों में Follow the wind. जी भाई One with nature. एक हमको दिख गया यहाँ पे ले 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 थोड़ा बीम्स कर गया समाट बड़ा तो समाट बीम्स हुआ कि 3 एक और किधर है ब्रा एक और किधर है Into the wind. लेफ्ट साइड में मोए मोए हो गया हाँ सही में मोए मोए हो गया था मेरा भी तो लेफ्ट साइड किधर है इधर किधर है भाई चीकी चीकी Time to go. जहाँ रोइन गार्ड अच्छा रोइन गार्ड के पास कहाँ है कहीं तो नहीं है Time to go. राइट गए लेफ्ट भी तो गए वो तुम पीछे से मैंने बोला तो इस तरफ मुड़ गए देखो किधर है बताओ नीचे में होगा हाँ दिख गया पानी में मोए अरे ये क्या है स्टारफिश बाकी सारा लेफ्ट साइड ये देखो दिख गया ब्रो ये ब्रो आई एम हियर ब्रो
किधर है वो अब? अरे गायब हो गया इधर से। वही है, तुम आगे करो तो सही। अगर तो पानी है, इसको हम डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? करके देखो एक बार, या फिर किसी एंगल वो करेक्ट। हाँ लेट्स टाइम, ये बोला फिर से टाइम 2 AM करने के लिए। चलो फिर से 2 कर देते हैं। मोए मोए चले भाई, हो गया। अब क्या There are leaves 2 around, ही बजे करे। हाँ अब दिख and I गया। know just the tune to accompany them. If you आ wish गया to इसके hear it. पास तो क्या है, अब यहाँ क्या ही कर लेंगे। यूज क्रायो, क्रायो क्या वंडरर से कर देंगे यार। तुम नूबी नूबी हो, तुम लोग को पता नहीं मेरे पास वो वंडरर है। नूबी नूबी हो भाई तुम लोग तो। This had better be important. हाँ हाँ किधर है भाई, किधर है? इधर है यार। ले न्यूबी न्यूबी तुम लोग भाई, न्यूब्स। क्या क्या गेम खेल रहे हो भाई तुम लोग सालों से, पता नहीं बस वंडरर है। एनिमे से इम्यून है, क्या कर ले? मैटर कर ले क्या? Quit following me. हाँ हाँ The wind rises. You're अरे dead. साले क्या कर रहा है हमको? अरे ये तो बच्चा आ गया, ये तो बच्चा आ गया। इसको तो फरीना ऐसा संभाल लेगी भाई, इसमें हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है भाई। तो फरीना काफी है इसकी चीज है। तो क्या बच्चा उधर दे दिया भाई हमने। इसका तो फरीना पैसिव में ऐसे अपना स्क्रीन बना देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। यूं ही मियाँ निकाल लेंगे, अभी रोते रोते भागेगी। मारो आराम से मारो, बैनी रहता है अभी तो बूम बूम कर देते। हाँ खत्म कर देगा यार, बहुत टाइम लगा। वो तो मर तो क्या। अरे कटसीन आ गया भाई, अरे भाई कटसीन आ गया। भाग गया डर के मारे, डर पक्का साला। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी बैनी बुआ को ले लेते हैं। बैनी मेरा हेल्थ बढ़ाएगा ना, अभी इसको हराते हैं। मिस मत कर दो बीच Gonna be epic. कोई बात नहीं, यो ही मियाज को ले चलते हैं। ये साक 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 फुल स्पीड में ये भाई, ये विंड करंट और स्पीड बढ़ाओ। ये ब्रो और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बादलों के ऊपर ले जाओ भाई। अच्छा उनमें से जाना है ना, रुक जा ब्रो, बादलों में से नहीं जाना ब्रो, रुक जाओ। ये ब्रो चलो इनमें से चलो है ये। अरे इसके ऊपर ऊपर क्यों जा रहा है, इसके नीचे नीचे चलना। Suck, 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 suck. Yo boy suck. तू मचले। अब कहाँ गए हम लोग? फुल स्पीड में आ गए भाई। किधर किसका दिन बनाना है बताओ ना। किधर नीचे जाना है क्या? बोलो बिरादर। मैप में तो दिखा रहा है लेकिन पूछ लेना चाहिए ना। अरे हाँ यही तो बोले कि यही सेम जगह तो दिखाता है, यही लोगों को मारना है। जो आ रहा है सबको मार देंगे। ये ले हट बात, कोई नहीं बोलेगा मेरे आगे। कौन है बूम बाम करने वाले? सबको तो मार दिए।
ये बताएगा। अरे भाई एक उड़ता हुआ आँख देखा है क्या? उड़ता हुआ आँख किधर मिलेगा बताना जरा। अरे भैया क्या बताएं, उड़ता हुआ आँख उड़ के कहीं तो चला गया। ठीक है ठीक है, बहुत बात करता है, जितना पूछो उतना बताया करो। लुक फॉर द ऑब्जेक्टिव इन एरिया, मतलब बताया नहीं कुछ। हमको तो लगता है वही है साला आँख, अपना रूप बदल के वहाँ पे खड़ा हो गया यार। कोई बात नहीं, डर के मारे देखा रे, ये तो खड़ा खड़ा मार रहा है। इधर जाना। 2 बजाए, 2 से इसको बड़ी प्यार है। संडाई ले लो, उसी पे सेट है। उस बंदे से बात करो, वो करना तो। अच्छा फिर से टाइम 2 बजा दिया। अरे दिख गया ये सब है। फिर से हमको कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। रुको अभी ये खासवा बेबी को ले लेते हैं। चलो ये किल यहाँ का सारा खत्म कर देंगे। हट, और किधर है? हट जा एनिमोस, ये खत्म कर दिया भाई। अब बताओ, एक बड़ा सा आया यहाँ पे। ए छोटा मोटा लोग क्यों ऐसे लोग का डैमेज। अरे बुआ रुक जा भाई, अरे बुआ, अरे साला बच्चा तो बहुत मार रहा है आजकल। किधर आई स्ट्रॉन्ग? अब रुको इसको 3 बनाते हैं। मजाक मस्ती हो गया बहुत यार, मजाक मस्ती बहुत हो गया। अभी देखो बैनी एक अल्टीमेट मारेगा इसको, एक बैनी अल्टीमेट मारेगा 3 बंदे का। अभी देखो हट हट हट, कौन है भाई? हट, खत्म भाई, डिस्ट्रॉय हो गया। आँख वाँख उसका सर, कोई नहीं बोल सकता भाई। बामा का कोई नहीं बोल सकता। ला स्लाइम चाहिए भी था, बहुत सारा मिल गया, बहुत सारा स्लाइम। और भाई 1 मिनट का हुआ है मेरे पास। हम ऐसे एक एक जगह जाके क्या कलेक्ट कर रहे हैं? काज हुआ है तो दिक्कत है क्या? अब इससे बात करना है। अरे गलत इन्फॉर्मेशन देता है रे तुम। आधी रात में काम करता है वो। हाँ डरता है ना, ऐसा मारे थे ना जो इतना स्पीड में भागा एकदम कटसिन दिखा के हमको। चलो क्वेस्ट तो हो गया कंप्लीट है। मेरा स्टैचू अपग्रेड करवा दो फटाफट। आ जाओ वर्ल्ड में एकदम फुल स्पीड में दौड़ते दौड़ते। क्या मिला? प्रीमोस तो मिलते रहता है, प्रीमोस पे क्या दिक्कत है? आ जाओ अनिकेत ब्रा, अनिकेत ब्रा। अभी तो अचीवमेंट से मिलेगा प्रीमोस। अभी ये देखो 5 इधर 5 इधर 10 प्रीमोस। तुम हमारे पास आए हम। किधर हो तुम? किधर हो तुम? इधर हो। अच्छा आधी रात में काम करता ही जो मुझे टाइम लगेगा लॉग इन कर रहा। अच्छा अच्छा कर लो लॉग इन आराम से। तुम लॉग आउट किए क्यों तुम लॉग आउट करा दो। नहीं मम्मी कैसे ऊपर गए जा चल जाते हो भाई तुम लोग? इतना बड़का बड़का पहाड़ चढ़ के हम लुलवा जाते हैं। बिना वंडर का हमसे कुछ होता नहीं है। अभी हम जा रहे हैं वंडर को लेने। अभी रुको, वंडर को ले लेंगे तब तो घूम के आ सकते हैं। अरे सला नीचे मत गिर, यहाँ से ऊपर आ सकते हैं एक बार में। चलो आ गए। तुम्हारे पास है क्या?
अरे तो हमको पहाड़ क्यों चढ़वा दिया भाई, तो पहाड़ के नीचे था। मैं वही तो कह रहा You bro, I'm here bro, किधर है बताओ। मैं आपको दिया था तो नहीं रहते, किधर है? अरे नहीं दिख रहा। अरे वो तो बहुत ऊपर है, कैसे जाएंगे वहां पे? दिमाग क्या वेंटी का करंट चाहिए? ओ छी, बाप रे कितना ऊपर है। हट, इसका कुछ तो करंट वरेंट वाला होगा ना। ये तो तुम उठा लिया, हम क्या करें अब? अच्छा ये वाला, अरे ये सब तो इजी है, तो बच्चों का खेल है भाई, सब कुछ है। ठीक है, अरे खुद आ गया भाई मेरे पास, हम नहीं उठाएं इसको। यो हानी सिंह कुछ ज्यादा ऊपर आ गया ये। शू ये ब्रो मिल गया ये। और बताओ, और क्या जाना है? हाँ जाते हैं, क्राफ्ट कर लेते हैं, क्राफ्ट नहीं किया था। एक और बच रहा हूँ, एक तुमने वेस्ट बनाया। कितना क्राफ्ट कर ले बोलो बताओ। एक बना ले ये। चलो एक बना लिया। अब चाहते हैं गैजेट्स में, और इसको कर देते हैं इक्विप्ड, और इसको कर देते हैं यूज। ये ब्रो किधर है बताओ? इधर है स्टॉर्म ब्रेकर पॉइंट के पास आ जाओ। उधर आ जाओ, तब तक हम आते हैं सूम सू करके 1 मिनट में। Squall and Fury. Relax. Yo guys, I'm back bro. Hello super art bro Zoo, किधर हो तुम? Even the wind cannot. अच्छा अच्छा 1 मिनट। स्ट्रॉन्ग बैकअप पॉइंट पे हाँ एक ही तो है, वहीं पे कोने में होगा एकदम, है ना? एंड में Relax. बीच में। चलो आ रही ब्रो। Squall and Fury. Wait a minute. ये रहा। Too slow. हम लोग आ गए। कीमदर यहाँ पे है। मिल गया, चलो वेस्ट करते हैं ये ब्रो।
यहाँ वाले स्टैचू 7 में खड़े या फिर जो सबसे पहला स्टैचू ऑफ 7 मिला था वहाँ पे खड़े बोलो? सबसे पास वाले में जाओ। जिसको सबसे पहले अनलॉक किया तो वहाँ पे जाते तुम्हारा ज़्यादा टाइम देखना क्या को दी हैं। ये देखो स्टैचू ऑफ 7 पहला मेरा फुल्ली अपग्रेड होने जा रहा है कमाइज। ये मैक्सिमम हो गया। ये देखो मैक्सिमम ली वही करवा दें यार दोस्त भाई सब मेरे। मुश्किल कुछ नहीं है भाई, तुम लोग प्रो, तुम लोग का एकदम कंप्लीट हो गया। इजी है तुम लोग, इजी। हाँ ये देखो फिर भी क्या करो। The wind rises. कोई बात नहीं, ये भी अपना ही आईडी समझ के करवा दो। Reputation. हाँ वो एक रह गया, वो भी मिल ही जाएगा। खोज ले क्या उसका भी। एक तो है बस, चलो हाँ कर ही लो, एक्स्ट्रा वाला भी क्यों छोड़ना। एक तो बना ही सकते हैं। बूम बम बूम बूम। अच्छा जियो क्लस भी है मेरे पास। जियो क्लस तो 5 बना सकते हैं, बना ही लेते हैं। यूज नहीं करेंगे। इलेक्ट्रो क्लस भी बना सकते हैं, बना ही लेते हैं। जिसमें बहुत सारे सीक्रेट दरवाजा खोल। वो सीक्रेट दरवाजा नहीं खुला है ना, पूरा उतना होगा 7 तक ना। वो पिलर वाला नहीं, दूसरा वाला। दूसरा वाला दूसरा वाला पता नहीं, किए होंगे, याद भी नहीं है, ऐसा नहीं किए होंगे। क्वेस्ट किए होंगे वहाँ पे दिखा होगा तब तो ले ही लिए होंगे। अरे यहीं पे एक शो कर रहा है स्टॉर्म लायर के पास, स्टॉर्म ब्रेकर्स। दूर के अंदर है। अच्छा सबसे ऊपर वाला नहीं किए होंगे कलेक्ट शायद। इधर हो तुम, 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर इधर ऊपर नीचे किधर आना है। स्टैचू ऑफ 7 के लेफ्ट में किधर, राइट में नीचे, ऊपर तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा। इसी पे आना है क्या? इस बाहर कहाँ है? How amusing. 2p दिख तो रहा है लेकिन है कहाँ भी नहीं दिख रहा। ले मर गया। अच्छा हाँ, अच्छा इसके बाहर आना है ना। बताओ तुम लोग अंदर में घुमा रहा है हमको। आते हैं। अच्छा तुम्हारे पास मैंने क्लास नहीं है। चलो आ गए बाहर। इधर है तुम लोग। यो आगे बाहर। Fury.
Behold! ये मिल गया ये। चलो लीवे चलते हैं। ये देखो इधर आओ। इनाजुमा में कलेक्ट ही नहीं किया। इनाजुमा का तो सारा का सारा बचा हुआ है। सबसे ज्यादा सुमेरु में। हाँ सुमेरु में तो बड़ा हुआ है। माउंटेन में भी कम है। वो तो रीजन खुलेगा तो फिर बढ़ाएगा ना। देखते हैं अगला रीजन खुल रहा है 1 महीने बाद। हैं 1-1.5 महीने बाद। बाप रे बड़ा जल्दी जल्दी खोल रहा है रीजन से। ये देखिए यहाँ पर एक Squall and Fury! नहीं यहाँ अनिकेत बुला रहा। अनिकेत किधर है? The wind rises. यहाँ पे स्टार बना तो दिख रहा है। तुम लोग किधर हो? नीचे ऊपर हो कि किधर हो? पानी के नीचे है। हाँ बताओ किधर जाना है? अरे किधर जाना है? अच्छा इधर है रास्ता। Squall and Fury! गेट कैसे खुलेगा? ये रुइन कार्ड को मारना होगा क्या? यहाँ ऊपर यहाँ पर है। यहाँ पर है। यहाँ पर है। अच्छा यहाँ पर है। स्टैमिना आने तो उड़ेंगे फिर। ये वाह चलो मिल गया। कॉमन Take it and have fun. गेट कैसे खुलेगा? बताओ निकेत ब्रो। निकेत ब्रो कैसे खुलेगी गेट? Wind rises. इसके एक क्वेस्ट ले। क्वेस्ट है तो छोड़ ही दो। बिना क्वेस्ट वाला बताओ। तो कौन सा स्टार्ट करना होगा ना क्वेस्ट? कुछ तो यहाँ पे पढ़ लिए। पोटैटो भी खा लिए। लोगों का मैटर चल रहा है। One with nature. I've got a sharp tongue. I just tell it like it is. Time to go. यो और बताओ क्या करना है? किधर जाना है? ये कौन है? ये आता है स्ट्रीम पे। दोस्त है। जब बीच में बंद करना तो पहले स्ट्रीम करते थे ना, उस टाइम आता था डेली। हेलो। अलग अलग जगह फाइंड करो सर। सबसे ऊपर होगा ये। हम्म देखा?
नहीं हमको नहीं मिला, मिल जाए तो बता देना, आ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हें साथ में चलना पड़ेगा, रास्ता बहुत दुविधा वाला। हैं किधर है, रुक जा। 3p हो ना तुम? 2 2p, 2p किधर गया? अच्छा 2p है रुक जा। Relax. अरे हैंग कर गया, लैग कर गया, क्या हो गया? Behold. Yeah, bro, I'm camped out. Coming. Squall and fury. Behold. पहाड़ के ऊपर। Squall and fury. भाई कितना ऊपर है, भाई कितना ऊपर है। हैं? क्या करते हो जेंशन का कंटेंट? कौन है लोकल एजेंट्स? हाँ हाँ चलो हम लोग मारे हुए हैं, अनिकेत और ये मिल गया। चलो तुम भी चलो साथ में मारते हैं। 16 तो नहीं मारे हैं, 3-4 मारे हैं बस। इनकम्प्लीट राइटिंग। सेंटर वाला पर लिया, अब क्या किसको कैसे एक्टिवेट करें? पजल है भाई, तब तो तुम लोग को करवाना पड़ेगा, हमारा तो हो नहीं कर रहा। चलो हम पढ़ के बता देते हैं। Its bone resides its spring fade। अरे खत्म हो गया। He stands with the statue to watch in each direction। अरे अपने अपने आगे आगे बढ़ा दे रहा है यार। ऑटो प्ले को पॉज करो। He stands the statue to right in each direction। The wind sweep ruin the snow-capped peak that days above the city of the Livia। कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने से, वीडियो देख के करना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया, हैंग हो गया, रुक जाओ पूरा गेम फ्रीज हो गया। किसका एक्टिवेट करना है? ये नहीं होगा एक्टिवेट अभी। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अच्छा ये नहीं करना था, तुम्हें तो बोले सारे करो। अच्छा रुक जाओ, चलो रीसेट हो गया, रीसेट। अरे तो पता नहीं चल रहा, तुम बोल देना रुकने के लिए, हम रुक जाएंगे। चलो हो गया, हाँ ये कर दिए। कर दिए। आ रहे हैं अनिकेत ब्रो, ये वाला। फिर से करें, चलो बताओ। ये वाला ये वाला
ये वाला Quit following me. ये वाला ये तो अरे अनिकेत को मिल गया। चलो अनिकेत के पास चलो। ये सब क्वेस्ट, ये सब बच्चा वाला क्वेस्ट, इसलिए हम लोगों से नहीं हो रहा है। हम लोग बच्चा नहीं है ना। अनिकेत कितना है? 3p। Wind rises. किधर है ये अनिकेत तुम ब्रो? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, विंड करंट आ गया था, ऊपर कर दिया। दिख गया। Squall and fury. अरे यहाँ पे 3-3 है। यहाँ पे यहीं पे स्टार दिखा रहा है 2-2। यहाँ पे खोजो, यहाँ पे खोजो भाई, 2-2 यहाँ पे। Wind rises. हाँ एक ऊपर में है, दिख गया हमको। चलो एक तो ऊपर में दिख गया, बस वहाँ तक पहुँच जाए। बाकी तुम लोग अपना खोज। अब एक और उधर खोजो, इधर ही कहीं। इतना फॉगी जगह क्यों भाई? हेलो चील जियो क्लास ढूंढ दो। जियो क्लास रुको, हम क्राफ्ट करते हैं, ठीक है? वहाँ जा कर के ढूंढो। अभी तक यूज करो, अभी जो है तो ढूंढ लो। ठीक है। Squall and fury. यहाँ पर 2 दिखा था जिसमें से एक ही मिला है। जीरा नीचे थोड़ा नीचे आओ, पूरा मुझे नीचे आओ। हाँ यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आओ। यहाँ पे कहाँ है? नीचे है? नहीं है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर आ जाओ। अच्छा दिख गया। भाई रेंडर नहीं करता है मेरे में। फूक जाएगा। स्ट्रीम सब बंद हो जाएगा। तुमने 5 बनाए थे ना, उन्हें यूज करो। यानी गेट वाला यूज करने के लिए है, इसको बोलते हैं। पहले ढूंढ लो, नहीं मिलेगा तो यूज करेंगे ब्रो। लीवे में आ जा। अरे यार
डैड Relax. क्या लगा देते हैं यहाँ पे टेलीपोर्ट मारे किधर टेलीपोर्ट मारे यहाँ टेलीपोर्ट मारो जो वहाँ आखिर में बोट है बोट पे तो गए थे वो वाली नहीं तो कौन सी कहते हैं क्या नाम है इसका The wind rises. वीडियो वाली नहीं दूसरी वाली उसको लाल कलर हाँ वहाँ पर भी गए थे वहाँ शो कर रहा था लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए थे शायद उड़ी ना लेकर में डायरेक्ट नहीं जा सकते क्या कौन बंदा है टेलीपोर्टर जरा अम्मी जाने जरा तो उधर चले गया उनको आते हैं लेके गया था थोड़ी ना एक बार रुको कौन बंदा से बात करना है भाई हैं तुम बोले बात कर लो तुम आगे बात करने हाँ हाँ ये तो बात नहीं कर रहा क्या नाम है उसका हाँ ये तो साला बात नहीं कर रहा पैम्प्टी सेटअप एक मिल गया चलो एक मिल गया तो पहले वो ले लेते हैं पूरी ना लेकर के तो चलेंगे किधर है किसको मिल गया 3p को 3p किधर है यहाँ पे टेलीपोर्ट यहाँ पर एक लौता वही है वहाँ हाँ कंफ्यूज हो गए हम तो किधर इसको मिल गया है किधर ब्रो वीडियो के सिर्फ पे किधर है कि अच्छा बाप रे बाप कहाँ इतना ऊपर में दे दिया है अरे भाई यहाँ रुक जा भाई मेरे The wind rises. नेमलेस ट्रेजर एक मिनट ऊपर चढ़ कर देखते हैं अबे यार Swan fury. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If ये someone मिल can't गया handle it, हाँ क्या बोले बैग में आ गया गैजेट्स में चले जाएं नहीं क्वेस्ट आइटम्स है क्वेस्ट आइटम्स में आ गए अब बोलो क्या नाम है गोल्डन कलर के बॉक्स आएंगे गोल्डन कलर के बॉक्स तो नहीं है भाई गोल्डन कलर का बॉक्स तो नहीं है भाई कहीं नहीं है गोल्डन कलर के बॉक्स देखो तो ध्यान से देखो बीच में होंगे ऊपर नहीं होते फिर अच्छा ये वाला नेमलेस ट्रेजर हाँ ये तो है ही तो यही तो पूछ रहा था हाँ इसका क्या यूज़ है क्या करनी है इसके साथ अब ऐसे दो और कलेक्ट करने तुम्हारे पास है क्या relax. अच्छा रुको यार यहाँ पर जियोकुलस भी होगा फिर एक शायद Quit following me. Behold. 2p
जियो तो स्विच करना पड़ेगा। यही है जी, और कौन सा जी हमारे पास? बोलो बोलो तो, हाँ बोलो तो है हमारे पास। इसको ले लेते हैं। पावटी सेटअप गेरो को स्विच कर लिए ब्रा। फट फट मर जाएगा ये सब तो। किधर चलना है अब? आ गए ब्रो इधर। ये तो लॉक है, इसको अनलॉक कैसे करें? इस पे श्रापित शक्ति है। ये girl. Oh my god, wind current. Fuck, wind current, fuck. ये क्या बात है? स्कैम हो गया ना? Behold. Oh my god, Tintin Fraser. Atlantis. Let's distribute these among अरे our forces. Aquaman आया हुआ है थिएटर से। Aquaman 2 हो गया कलेक्ट। अब बताओ क्या करना है? थ्री पी बहुत देर से यहाँ पे खड़ा है, इसको मिल गया है क्या? एक मिल गया। अरे अनिकेत को बहुत देर से एक मिल गया भाई। चलो इसके पास थ्री पी किधर है? थ्री पी Too slow. Squall and Fury. The wind rises. जागे मेरा ब्रो, मत जाओ। अरे थ्री पी कितना दूर है भाई हमसे? अरे किधर गया अनिकेत? गायब ही हो गया भाई। यहाँ पे आ गया है। अरे यहाँ बुला के उधर चला गया भाई। ऐसे क्यों किया मेरे साथ? चलो आ गया तुम्हारे पास। अब बोलो ब्रो। ये तो फूडी ना लेके जा रहा है। सेटअप करते हैं, बताते हैं उसको। अभी हम आका लेकर के जाएंगे। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। किधर खामी साटो आगा? खामी साटो। अरे मेरी आका नहीं दिख रही यार। डिलीट हो गई क्या? हाँ अभी अरे ये क्या हुआ? कुछ तो स्क्रीन के पास दिखाया मेरा।
कहाँ से क्या कलेक्ट करना है? रुक जाओ, मार्क करने दो। 2p हो ना तुम। चलो मार्क कर लिए। वहाँ पे क्या है? बस आना है, कलेक्ट करना है। अच्छा, एक मिल गया। ये क्या हुआ अभी? पता नहीं क्या हुआ अभी। ये शायद कुछ अनलॉक किया। ये ले मर गई है का बीच रास्ता में। आयाका से तो नहीं हो पाएगा, फुडीना को ही लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। अब क्या फायदा उधर जाने का? क्या फायदा उतना दूर जाने का? There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Behold! Quit following me. Squall and fury. Behold! Squall and fury. Behold! Squall and fury. Rises. Let the world collide! Showing you Inciting insects. Behold! Everything was futile.
स्टैचू लेवल 8 पे ही है, 9 और 10 करना है। अब बाद में फाइंड करते हैं। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए। चलो गाइस, तो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी बने रहने के लिए सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम, तब तक के लिए Audio.com. टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।